welcome to our Legal Matters, which is a new program. It's been some time since we came last time. तो बड़े लोगों ने हमें बहुत कांटेक्ट किया, loads of text messages came through, emails भी आए लोगों की, तो वो चाह रहे थे program दोबारा. We're back now, and inshallah we're going to have this a very interactive program जहाँ पे आप लोग भी इसमें participate करेंगे. और अगर आपके कोई मसाइल हैं regarding immigration, civil litigation, then please you can contact us. Once again, हमारा प्रोग्राम बड़े अरसे के बाद आए, but we're back on air now, और आपको बताते रहेंगे जब हमारे again changes आएंगी, जब ये टाइम बदलेगा to an evening program, we'll notify the viewers. As usual, जो हमारा प्रोग्राम है is going to be interactive, is going to be about the legal issues, current issues के भी बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस वक्त कम्युनिटी को अफेक्ट हो रही, जो हम सब पे अफेक्ट होते हैं, उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे. And this is how we're going to run our program. आज का प्रोग्राम ये होगा बिकॉज आज हम इसी को इमिग्रेशन, सिविल लिटिगेशन और जो इस वक्त जो एक दो इश्यूज कम्युनिटी में हो रही जहाँ पे पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे विद माय पैनल टुडे. तो आपसे ये अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको कोई व्यूज़ हों या अगर आप उसमें शामिल होना चाहें तो जो स्क्रीन पर नंबर आएगा आप उस पर कॉन्टैक्ट करें. और हमारे अगर आपको कोई इशू है जहाँ पे ऑफ एयर डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. एज यूजुअल आई वांट टू वेलकम माय गेस्ट Ali Raza, who's a businessman. And Raj Chopra Saab is a solicitor. Welcome on the platform again, Raj. Thank you very much. और अपने Raj Saab is a community leader. Welcome, Raj Saab. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सब नाज़रीन. माशाल्लाह से. So again, अपने जो पैनल हैं जो आपने इस वक्त देखा है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. कुछ इस तरह के वाक़े जहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले अभी मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ जो इस वक्त इमिग्रेशन के हवाले से. इमिग्रेशन के जो इस वक्त स्पाउस का जो वीज़ा गई, आप सबको पता है इस वक्त जो पोजीशन है 18,600 की है, वही रिक्वायरमेंट है. उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. अगर किसी को बुलवाना है पाकिस्तान से या कहीं से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आउटसाइड यूके, तो वो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहते हैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा, विल डिस्कस दैट एज वेल. तो आई वांट टू जस्ट बिगिन राज चोपड़ा से. राज जस्ट बिगिनिंग आपसे मैं मुतस्सस से बात करता हूँ that जो 18,600 है the requirement for spouse visa, इसमें देखें बड़े लोग हैं जो इस वक्त find it difficult because उन्हें क्या 18,600 has been quite high. तो इसमें home office का क्या position है अभी? Been lenient or is going to be the same? I don't know whether people are aware why they have come out with that figure 18,600, and then there's I think £2,500 for if you have another child. The law says if you claim benefits, if you got £16,000 of saving, you are entitled for benefits, right? And then if there's a husband and wife claiming income support, they get I think £75 per week each person. So if you work it out, that's £16,000 plus the rest makes it £18,600. So that's the minimum you got to have to call somebody, your dependent spouse, you know, whoever, to support that you could support them in this country. Yes. So that's the requirement, but this does not apply in the European Union. EA law doesn't say. Of course, yeah. Yeah. What the European Union obviously is different rules, regulations, Yeah. but this is outside Europe we're talking about. So you do outside Europe game. So obviously this is one of the important requirements of the meeting the criteria. अगर नहीं meet करोगे, then obviously you're not going to be eligible for sponsor. उसमें ये भी है अगर कोई अपने वो जो wage slips हैं, you need to show that one of the key things. What are the requirements? For example, आपको अपने 6 months के bank statements लाना है. थोड़ा सा इस पे बात करें. Yeah, minimum 6 months bank statements, cash in hand is not acceptable. I mean, they can put it in their application form, but the Home Office will always query that it, you know, we want to see a solid proof like money has come into the bank, taxes been paid, etc. It is the part you mentioned about tax. तो अभी नाज़रीन को बताते चलते हैं अगर आपका कोई issue है regarding visa, spouse visa, अगर आप चाहते हैं उस पर थोड़ा सा information लेना तो please आप हमें contact करें. We'll be able to discuss that. और off air भी अगर आप चाहते हैं बात करना, we will be able to do so. हमारा जो contact होगा control room से आपको मिलेगा. तो अपने राज अभी आएंगे आपके पास regarding spouse and एक दो और बातें हमसे करना है.
अभी चलता हूँ अपने अली रज़ा से बात करते हैं. अली रज़ा, थोड़ा सा I'm just diversing a little bit in my discussion that one of the हम यहाँ कानून के बारे में बात कर रहे हैं. कानून is the most important thing. जहाँ पे जो भी यहाँ country में रहता है उसको uphold करना पड़ता है. They have to respect the law of the country. Now similar जब law protection कर रहे होते हैं जो law enforcers होते हैं उनका भी एक role होता है play करने की. मैं इसलिए आपसे ये discuss कर रहा हूँ because there have been number of issues जो हमने previously discuss कर रहे थे अपने पहले program में जहाँ police excessive force use करती है. थोड़ा सा let's just talk about that because एक वाक़या हुआ था not so long ago, about a week ago. Yeah, there's been a recent incident which took place in Tesco, in the Tesco in Rochdale. There was two professional couples, both from Asian, and they were assaulted by police officers. And it's gone viral on YouTube. You know, they were filming it, and there's been a petition out. I don't know if exactly. Yeah. ये जो अभी नाज़रीन देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ये वो इंसिडेंट है जिसका हमारे जो कॉलीग बिजनेसमैन अली रज़ा साहब जो डिस्कस करें पुलिस के बारे में जो कानून जो आप बता जिस तरह हम बात कर रहे हैं तो जो लॉ होता है वो कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है. इक्वली द पुलिस का भी एक जिम्मेदारी होती है तो वो भी अपना रोल प्ले कर रही है. मगर इस बार आप देख रहे हैं पुलिस के जो फोर्स यूज़ कर रही है दो दुकान में गए कस्टमर्स अपनी शॉपिंग करने और उनके साथ ये हो रहा है. तो अली रज़ा, you carry on what you were saying about this. The incident took place because what happened was we found out afterwards the chap's wife's sister had a kidney transplant, so they were buying water for her, and because they bought an excess, you know, more than 15 bottles or whatever, Tesco would not serve him. So he questioned it, you know, which any customer can do. They can question it because it doesn't make sense, because he went over to various other Tesco's and they always served him. Went to the one in Rochdale, they wouldn't serve him. So he questioned it. The police came along and they started physically pushing him and assaulted him, and now they're doing him for assault. And the couple, they're doing the couple for assault when they assaulted the couple. It's very interesting, Ali Raza. Obviously, Joe Hawaii, but it's a very sad scene. But police get Raj, the police has responsibilities. Obviously, it's a difficult role they're playing. They have to uphold the law. We don't know how many passes one facts here. Let's be 100% clear that we haven't got the other side story from the police yet, but we're just giving extra what's happening about the police force. Ali Raza and Boda mentioned about what happened, but just coming on to the police, the issue regarding the force, how much they use, was that appropriate? Well, we don't know exactly the facts of the case. We only saw the video very briefly. All the officers are very, very good in Greater Manchester. A lot of respect for them. However, don't know what incident took place, what happened. It needs to be investigated thoroughly. Yeah. Maybe they will allege that the officers used reasonable force to arrest somebody. This is what is being happening, but it appears that excessive force was used. There wasn't any need for it. This person is being assaulted now, and the police officer should treat everybody with dignity, with respect, and uphold the law at the same time. As Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So this was very appalling. ठीक है Raj, I'll come back to you. Raj Sahab, आपने इस वक्त we are talking about the rules regulations. इस वजह से हमारा प्रोग्राम जो है इसमें ये चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये कम्युनिटी को अफेक्ट करता है. तो आप क्या समझते हैं तो जो ऑब्वियसली पुलिस का भी तो एक रोल है, उनका भी तो एक जिम्मेदारी, उनका भी डेलिकेट सिचुएशन होती है. वी नीड टू नो द होल फैक्ट्स व्हाट्स रियली हैपेंड. सो आप क्या समझते हैं दैट obviously this could have been handled differently. That's what I'm thinking. Yes, ये जो भी पुलिस वाले जो नज़र आ रहे थे ये अनएजुकेटेड हैं, ये नॉनसेंस हैं. इन्होंने एज ए जैसे उन्हें अपना प्रोफेशनल उन्हें हो के उनको हैंडल करना था, उन्होंने प्रोफेशनल तौर पर उन्होंने हैंडल नहीं किया. उन्होंने खुद पुलिस वालों ने ऐसे प्रोटेंड किया जैसे वो खुद स्ट्रीट गैंग है. पुलिस वालों ने एज ए स्ट्रीट गैंग अपना उनका जो बिहेवियर था वो स्ट्रीट गैंग का था. वो स्ट्रीट बॉय थे और स्ट्रीट बॉय की तरह उन्होंने हैंडल किया. उन्हें एक डिसेंट और एक रीजनेबल सिटीजन को उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने किया.
इसलिए हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस चीफ से कि ऐसे जो अनएजुकेटेड इनका चेक किया जाए, इनका बैक हिस्ट्री चेक किया जाए। ये ज़रूरी है कि ये सारे स्ट्रीट से उन्होंने इनका कोई उन्होंने चेकअप नहीं किया कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है। तो अगर एजुकेटेड होता वो ऐसे ना करता, वो जेंटली उससे मिलता, जेंटली उसे हैंडल करता, लेकिन ये अनएजुकेटेड पुलिसमैन था, ये कोई प्रॉपर पुलिसमैन नहीं था। अगर उसे एजुकेशन उसके पास होती, एजुकेशन वाले में और अनएजुकेटेड में यही फ़र्क है। अगर वो एजुकेटेड होता और उसे पता होता और उसे बात करने की तमीज़ होती कि मैं एक सिटीज़न से मैं कैसे बात करनी है, और ये तो इसने बिल्कुल स्ट्रीट वाली बात की है और स्ट्रीट बॉय की तरह बात की है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। राय साहब, आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। आप एक कम्युनिटी के लीडर हैं, तो आप जैसे सेंटिमेंट्स शेयर कर रहे हैं या आप इस वक्त अपने जो एयर कर रहे हैं वो कम्युनिटी की तरफ से बात करें, पर ऑब्वियसली जिस तरह राज ने कहा द फुल फैक्ट्स आर नॉट नोन, तो पुलिस को एक डेलिकेट सिचुएशन होता है, उनको काम करने का भी। आई अंडरस्टैंड जो आपने कहा एजुकेशन वाला, बट लेट बी क्लियर ऑन अली रज़ा, द पुलिस फोर्स व्हेन रिक्रूटमेंट होता है उनका बड़ा स्ट्रिंजेंट process होता है। Obviously they have to select through the selection process. It is a very difficult process they go through, but just answering to a little bit to Razi Saab, आपका क्या कहना था अभी? What I wanted to say was, look, we have cameras now. Things are recorded, so you can't lie with the camera. I mean, everything was taken from the incident from the beginning to the end. If you look at the full video, we've only shown part of the video. Now, they've started up a petition. I'm not sure if it's gone to 100,000, but I think it will do. Now, Tony Lloyd is the MP for Rochdale. He was the police commissioner for Greater Manchester Police from 2010 to 2015. Now, he should be taking this up in the House of Parliament. Once it reaches 100,000 votes, it needs to be taken up, because as far as I'm concerned, the video shows what's happened, and the police should not have physically assaulted. And this is common, where they physically assault an individual and then they charge them for assault. They've done this many, many times. And I feel as if in this situation something needs to be done, and I would love to know what the police will do to these officers who did this. Okay. Well, there is a complaint procedure. The victims who have been handled this way, if they got concerns, there's a complaint procedure against the officers, and they will be either disciplined. It will be heard properly through proper channels. We will advise them to go through and make a complaint of their professional conduct of these two officers, and they should not manhandle, especially the woman who suffers from kidney problems, and she was there. It was his sister, and it was in a public, which is also very embarrassing to see that it was not a reasonable force which was being used to arrest them. Obviously we need to know the further circumstances. Raj, अपने व्यूज़ को बताता चलता हूँ. What's happened London में in particular, the city of London, there was some 62,000, approximately 62,000 force, जो police force ने use करें against the people. Some 62,000 arrests have happened where they've used extra force. तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, just on where the police have used excessive force has been recorded in the data. We don't have the figures for across the country, but that is one of the appropriate kind of figures we've just received, 62,000 from London. So Raj, I'm just going to ask you one thing. This is London ki city ka bata rahe hain, that 62,000 metropolitan police have used force. It's on the data. Isn't that excessive? And after that, 1/3 of them has been from the black community. Isn't that, I mean, there's a disproportionate use of force. This is the point. आपने या इस वक्त जो बैठे राइट साहब कम्युनिटी के लीडर है वो disappointed. एक कॉल आ रही से लेते हैं, we'll carry on. जी, welcome to our legal matters. जी, अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. जी, राजा साहब ने अगे थोड़ा बयान दिता है तो उन्होंने आदेश ही वही थे कि जो पुलिस वाले हैं एजुकेटेड ने पाकिस्तान तो नहीं आई मिलाया है. जी, ठीक है. और आप कुछ और कहना चाहते हैं? मतलब आपने इस वक्त वीडियो देखी है. लीव द एजुकेटेड वालों को इस वक्त साइड पर रखे बात को. आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, आपने ये देखी है अभी जो स्क्रीन पे लगाई थी हमने जो बैकग्राउंड पे? अभी नहीं, वो किसी ने मुझे फोन किया तो राजा साहब हमारे दोस्त हैं, तो अभी इसलिए वो उनसे बात करना चाहते थे कि तो राजा साहब को मौका दें बोलने के लिए, जो है ना वो अच्छा काफी बात के ऊपर जो है वो बहस कर सकते हैं, बोल सकते हैं. बिल्कुल. आपका क्या, आप अपना बताएं, आपका क्या व्यू है इस वक्त?
राज साहब तो बता रही तो जो पुलिस वाले जो है वो उसने जो है ना अपने वो उससे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अनएजुकेटेड तो नहीं हो सकता, लेकिन जो है ऐसे कह लो कि वो कंट्रोल नहीं कर सका, और रेशिस कह लो जो है ना। आप तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? वसीम अफजल चौधरी जी चौधरी साहब, ये मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं जो ये जो कपल थे रोशनल में जो गए थे उनके साथ जो हुआ है, आप जल्दी जल्दी बताएं, आपकी नज़र में क्या है, आप क्या फील करते हैं? उनके साथ ठीक हुआ या गलत हुआ है, इसका जवाब दें। वो तो बहुत गलत हुआ है, जो है ना पूरी कम्युनिटी गुस्से से भरी पड़ी है। तो हम तो खुद उधर जो है वो स्ट्राइक करने के लिए 200 बंदा इधर मैनचेस्टर से इकट्ठा किया जा रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट है कि मेरे पास, और इंशाल्लाह अगर कोई और है जिससे डिस्कशन में आना है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनीथिंग टू डू विद इमिग्रेशन, सिविल, जो भी आपके इश्यूज है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस बिकॉज दैट्स व्हाट वी हियर टू डिस्कस। मैं अब चलता हूँ राजा साहब के पास। राजा साहब, ऑब्वियसली लेट्स नॉट गो ऑन एजुकेट, बिकॉज वो जो इशू होता है ना, पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, तो जो रिक्रूटमेंट का होता है, जिस तरह ने मिस हैंडल करा है, राज इज अ सोलिसिटर, ही मेंशन्ड अबाउट द complaint procedure. I'll come to it in a minute. Call our Isam Shamil Garde. Welcome to our legal matters. Hello. Hello, who's calling and where from? Assalamualaikum. Wilford speaking from Sheffield. Walaikum Assalam. Welcome to the program. Yeah. जी मैंने आपसे एक दो बातें पूछनी है। जी। ये जो वर्ड है reasonable force, जी, reasonable force पुलिस कहाँ तक यूज कर सकती है? okay, reasonable force, ठीक है जी, क्योंकि इस वर्ड में एक बहुत बड़ा जो है ना वो इसके मफहूम में आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता है कि reasonable कहाँ तक यूज होती है। सही बात। आप जी, आप ये मुझे बताते चलें, आपने ये वीडियो देखी थी जो अभी प्ले हो रही थी बैकग्राउंड पे कुछ 10 मिनट पहले, आप क्या समझते हैं, ये बहुत गलत हुआ है? ये इंतहाई है कि पूरी एक एशियन कम्युनिटी के लिए एम्बैरेसमेंट है। जी, ठीक है, ठीक है। और इसका डेफिनेटली केस फाइल होना चाहिए। ये किसी की कम्युनिटी की और इंडिविजुअल की पूरी एक तस्दीक करनी है। जी, ठीक है। जो इन्होंने ये केस हैंडल किया है ये टोटली अनप्रोफेशनली किया है। ठीक है, जी जी। इस तरह के असल्ट तो रोजमर्रा माशरे में और एवरी डे हम देखते हैं जो होती है, लेकिन अगर सेम ये केस हो किसी वाइट के साथ, वो इसको ऐसी चीज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपका पॉइंट में आ चुका है, थैंक यू। अगर आपका कोई और डिस्कशन में आना चाहें, प्लीज फील फ्री टू डू। थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर दें कि रीजनेबल फोर्स चलें, ठीक है, कर दें, कहां तक इस्तेमाल की जा सकती है किसी कम्युनिटी के खिलाफ। बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Okay. The position is there is no legal definition of what is reasonable force in law. It could be for one person, like a bigger man punches a small man, it would be more excessive than one small man punches the bigger man, right? So there's no legal such definition, and I don't think so the police officer acted racist in that situation, because it is they, whether it's a nobody, whoever it is, they will probably act the same way. So you're saying that that was not racist? अभी मैंने, चलो ठीक है, we don't know about the figures on that. मैं नाज़रीन को बताता चलता हूँ, इस वक्त मैंने भी फिगर्स दिए लंदन के बारे में, 62,000 जहाँ पे पुलिस ने फोर्स यूज़ करे against the black community, and now, sorry, but 62,000 is the data recorded. 1/3 was for the black community. Isn't that disproportionate? That's the point. Well, I know वो इंसिडेंट की मैं नहीं बात कर रहा, बात ये जो हमारे कॉलेज इस वक्त कॉल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं that हमें जो हमारे कम्युनिटी के साथ हो रहा है, ब्लैक कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी, that is been heavy handed. बात ये, yes, it may be heavy handed. As I said, if anybody's been handled in such a way, there's a complaint procedure and the police will take action against these officers, or in any incident against African origin or Asian people. I'm not saying that all the officers are the same, but what we saw today, etc., which is disgusting, especially being a woman, the officers should have been more polite, courteous, or taken on the side to speak to them and first find out what's the problem, rather than somebody made a complaint, they're buying excessive water, they're not allowed, and the guy says, why can't I buy? And they just jumped on him and started assaulting and punching him, and then they got done for
Ji. for assaulting the officers, which is, I think, it's totally wrong. And if they come to us, we are quite happy to take their complaints further. कॉल आ रही है, शामिल कर दो. Welcome to Ali. जी. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? Is this live on the TV? It is live on the TV. आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं फकीर मोहम्मद बोल रहा हूँ रॉचेस्टर से. Welcome. आपको. And could I able to speak to them? Yes, you can. You're live on a program. आप इस वक्त live जा रहे हैं TV पे. You're on the screen right now. आप अपना question बताएं. या आप अपने आप को. Right. What I wanted to say is used questioned on the air is reasonable force. जी. That is for the criminals, not a situation Absolutely. what happened in Asda. Exactly. Tesco. Tesco, I mean. ठीक है. Okay. You know, I mean that wasn't not a criminal case where they have You had to use that force. Absolutely. use a reasonable force. Absolutely. There wasn't a criminals. ठीक है. The police officers, the both of them who's handled this case, which was not a criminal case where they have to use a reasonable force to charge them or arrest them. जी. Got it. ठीक है. Yeah, तो absolutely. thank you very much. अगर आप feel करते हैं और कोई questions इसमें No, but what I'm saying बात is I करेंगे. want you to Make a put point, this yeah, over yeah. the air I will do. clearly, Yeah, there because was no they criminal. was not a Yeah, criminal. yeah, yeah. They were only Absolutely. going in to buy Water, a that's certain right. amount of water. Yeah. They did explain as well for the reason they wanted to buy the water. ठीक है. And also they explained to buy the water from other stores which they did not refuse. ठीक है. आपका we got your point. Thank you very much. I'm going to come to that in a minute. Raj, the complaint procedure. Call our शामिल करते. Welcome to our legal matters. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Welcome to the legal matters. जी जनाब. जी मैं वकील साहब से बात कर रहा हूँ. आप वकील साहब से बात करें. आप इस वक्त live and air है और ये आप discussion में आ गए. You're in discussion. अपना नाम बताएं. जी मेरा नाम नदीम है. जी नदीम भाई. Welcome to the program. अपना आप. वो एक्चुअली ये देखा मैंने पिक्चर जी. वीडियो क्लिप. तो इसमें ये मतलब ये तो एक साइड आप बता रहे हैं ना कि उन पे पुलिस ने अटैक किया है, असॉल्ट किया है. सुन रहा मैं. आप क्वेश्चन बताएं. ये मतलब ये नहीं आप बता रहे कि ये वजह क्या हुई है, किस वजह से उन्होंने पुलिस ने ऐसा किया. जी जी. Do you want to answer that? I'll come to that in a minute. ठीक है नदीम साहब आप और अगर आपका क्वेश्चन है तो बताएं. वो कॉल ड्रॉप हो गई. कॉल आ रही थी शामिल करते हैं. We'll come back to that. Welcome to our program Legal Matters. Hello. Hello. आपकी पीछे बैकग्राउंड टीवी ऑन है, इससे जरा वॉल्यूम कम कर दें. जी जनाब. आपकी टीवी. जी हेलो. यस सर. एक्चुअली मैं सलाम भाईजान. जी वालेकुम सलाम. ये लाइव ऑन प्रोग्राम. आप अपना नाम बताएं. मेरा नाम मोहन है. मैं इंडिया से हूँ जी. और यहाँ पर मैंने सिटीजनशिप लिया हुआ है और मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ. ठीक है. तो मदर को तो फिर आप वो बताइए कि विजिटिंग वीजा पे उनको बुलाना चाहता हूँ. तो मैंने सुना कुछ अक्टूबर या नवंबर में समथिंग कुछ रूल्स चेंज होने वाला, कुछ उसमें कुछ इफेक्टिव आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, तो वो बताइएगा जरा. और क्या क्या प्रोसेसर रहेगा सर बुलाने के लिए. आप हमारा प्रोग्राम वॉच करते रहें. आप कभी जवाब दे दें. सो आप प्रोग्राम देखते रहें और इसी प्रोग्राम में आपको बता दें किस तरह विजिटर वीज़ा करते हैं. विल एक्सप्लेन टू यू. सो थैंक यू फॉर योर कॉल. शुक्रिया आपका बहुत बहुत. थैंक यू. Just coming back, we need to answer the visitor visa in a minute. उस पर डिस्कस कर दें. But जो नदीम साहब ने कहा, let me just put that perspective. हम वन साइडेड नहीं बता रहे हैं, व्यूज़र को बताते चलें. Because we haven't got a police पुलिस की जो रिस्पॉन्स हमें नहीं आई है, we don't know. But what we're talking about, इस वक्त हम ये डिस्कशन में ये आ रही, was the incident जो हुआ, was it right the way it was handled, the way the force has been used? Can I just elaborate? Because I've seen all the video and everything, so I can explain to you what happened exactly. They've gone into many Tesco's and they've got water from all the Tesco's. They've gone into this specific one, which was in Rochdale, and they were told they cannot serve them because they've ordered too much water, their policy or whatever. But there was no nothing, no placards, nothing which shows that they can't use that amount of water. It doesn't say you can't or anything like that. So they questioned it. In the video, you can see everything what's been going on. He comes, I think the chap is called Mr. Hussain, the young lad, the professional chap who was arrested.
Yeah, he Joe, ca- yeah, yeah, that's right, that's right. He goes over, he calls a police officer himself, Right. right? Because they were arguing with the security or whatever. Now, once he calls him over, that's when the police officer and him get into a discussion, But and Ali, is he it tells him to leave the was he pri- leaving the police? Was he asking him to leave and he didn't leave? Was he refusing to take? No, he was he was asking him a police? question. He was discussing it with him because look, it could be me or you or anybody, right? We've gone in there and we've ordered JP. water. Now, why are we told to leave because we want water? And then we're asking why are we? Okay, we'll you come know- to that in a minute. But obviously, Raj, I'm going to ask you a question तुमसे पूछना है that when the police ask any civilian that you must leave the premises and we're asking you to leave, should they not obey that? Should they not? Is at that point they will interact and may go to making some form of to make sure that the person is evicted from the premises if he's not listening. What's happening? We haven't got full facts. We are members of the public. We created the police. Police did not create us, right? Absolutely. And if a person is asked to leave, he has a right to ask why. Yes, Why yes, am I? yes, yes. Why I should be leaving? Absolutely. I'm like a legitimate customer. I've Yeah. come here. It's open to every general public, and if the officer is just not interested to listen to them and try to throw them out of the premises, and that person should fight back to say, no, I want my right is to be justice, yeah. here. But the way the police officer has Doesn't handle it, without yeah. any Yeah. reason try to punch that gentleman, I think it's disgusting. Yes. And the uh, lady, Joe, yeah. lady di. I mean, Raj Saab, बड़ा अफसोस ना situation देखा है. Obviously, is made training की ज़रूरत है. We need. This is why Joe complains. Ali Raza ने mentioned it. There's a petition going on. It should be immediately suspended, and he's not fit officer to Pen perform investigation, public allegedly. duty. Pen He's a investigation. public जी. servant Yeah. performing public मेरे duty. दोस्त ने कहा कि एजुकेटेड पाकिस्तानी है, ये स्कूल रनर बॉय है, मैं मोस्टली को पुलिस मैन को जानता हूँ, ये स्कूल रनर हैं, कोई यूनिवर्सिटी से अगर पास हुआ हो एजुकेशन वाला वो ऐसे नहीं बिहेव करेगा. ये स्कूल रनर बॉय हैं और इन्होंने ऐसे मोस्टली 10-20% उन्होंने ऐसे पुलिस मैन भर्ती की हुई हैं सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट करने के लिए पब्लिक को, डराने के लिए पब्लिक को. एजुकेटेड होता अगर वो सेंसेबल होता तो ऐसे ट्रीटमेंट ना करता, वो कहता ठीक है लीव द प्रेमिसेस, और वो टेस्ट को कहता यू आर बार्ड जी. वो टेस्ट को अगर उन्हें नहीं एक्सेप्ट था, अगर वो ट्रबल तो कर नहीं रहा था, वो थीव तो था नहीं, वो चोर तो था नहीं, क्या वो चीज़ें उठा के भाग रहा था कि उसे रोकते, अगर क्रिमिनल फेंस तो उसने किया नहीं, अगर वो सिर्फ यही कह रहा है कि मुझे मेरी गलती क्या है, लेकिन ये उसकी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और ये उसको फोर्स कर रहे हैं. जैसे कश्मीर में इंडियन फौजी उन्हें एक फोर्स में कर रहे हैं, इसी तरह ये फोर्स कर रहा था कि जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और ऐसे सोच नहीं सकते कि जिस तरह इस पुलिस मैन ने अपना उसके साथ ट्रीटमेंट किया, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है. और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको डिसमिस होना चाहिए. और ऐसे और भी जो भी कई लोग इसकी कंप्लेंट नहीं करते. ये नहीं कि ये पहला वाकया है, ये हज़ारों वाकये होंगे, मोस्टली एशियन कम्युनिटी के साथ ऐसे वाकये होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वो ही कुछ ऐसे हैं ज़हनी बीमार हैं पुलिस ऑफिसर जो अभी तक वो उनको गुलाम समझते हैं कि उनको बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते, और इसी वजह से ये वाकया हुआ और ये रिकॉर्डेड हो गया, इसलिए हाईलाइट हो गया. अगर ये हाईलाइट रिकॉर्डेड ना होता, ये इसकी किसी ने फिल्म ना बनाई होती तो ये भी इसी तरह दब जाता, किसी को पता ही नहीं चलता. बहुत अच्छी बात है. I agree with you. There are so many incidents which are not reported or filmed. Yeah. And they go unnoticed, and people do feel police brutality. The majority of the time, these things happen to people. अच्छा, हम अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. We're going to be right back in a couple of minutes, so please rejoin us in a very lively interactive program about issues, current issues. अगर आपके पास कोई legal issues है regarding immigration, spouse visas, entrepreneur, जो भी है, please pick the phone, give us a call. We'll be more than happy. We'll be right back in a few minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our Legal Matters. We're having a live discussion and a very interactive program. इस वक्त चल रहा है. We're talking about some of the current issues which is affecting the community. इस वक्त हमने एक बड़ा horrible situation दिखाई थी जहाँ पे some people got attacked by the police and the police का एक issue बना हुआ था and why they happened, a number of reasons. We haven't got a full facts, but obviously हम वो discussion कर रहे हैं. Why, what kind of training the police should be doing. This is the kind of conversation we're having.
obviously there was excessive force. The police will argue against it. They'll say this was the reasonable, they had to do, apprehend this person because he wasn't listening, he was become a threat to them, but we'll have to look in that. इस वजह जो clip फिर चल रही वो दिखा रहे थे. Right, IPCC जो है, Independent Police Commission जो दी, they will look into that obviously. The person who's a victim has to make a complaint in the first place. They're totally independent organization, and they will look at all the facts, and then they will take appropriate action against that officer. What needs to be done, whether he's a fit and proper person, because he's a public servant performing public duty, and he should be more courteous, and the way the way he engaged himself should be more appropriate, should be more, he should be in a better way handling. Coming back to you, because of time, I'm sorry, I got to rush you. I mean, this is, as far as I'm concerned, it's a worldwide phenomenon against Islamophobia. Not just police officers doing this in this country, it's probably a lot of countries in Europe, in America, targeting, I believe, Muslim people. Yes. If you look at the nationalism which is going on in Europe right now, Le Pen's just becoming, we don't even know in the next election she might even win it, and she's a national, she's a nationalist, National Front Party. Then you've got Hungary, and they are completely racist towards us. And then you've got now. We know it's Europe a high rise. Sorry to interrupt you, but Europe is a high rise of the right wing radicals, nationalism, national populism. All right, does it talk? इस पे हम एक और debate करेंगे किसी और time पे. But just coming back, Raj, on this one. So the Israel job and figures is 62,000 approximately from London Metropolitan Police have used force. 1/3 were black people. This is हमारा जो debate is about that, the disproportionate level. I want to let the viewers know. Israel just Shadow Home Secretary Diane Abbott. She's made that very clear that this was any incidents like this. जहाँ पे police record करें, they need to record the data where they use excessive force. जहाँ पे भी injury होती है, and there's been so many deaths because of the police using excessive force. They need to keep record on it. She mentioned this, उनका जो Shadow Home Secretary Dan Abbott MP, she said that those who do this and disproportionately high figures with the black people can be discriminatory. So it can be a level of discriminatory, meaning racism in there. So just... Can I just interrupt 1 second? The 62,000 that you've got, is it just black people or is it Asian people? No, 62,000 recorded police force for everybody, white people included. Okay, 1/3 is black people, out them, which is very high. Yeah. Raj, I just want to अभी जो obviously इस debate को हम discuss करेंगे, views को बताते चले, because we actually not got enough time to discuss in more detail. But in the program हम इसको discuss करेंगे, further discussion चलती रहेगी. We're going to be contacted with the police as well. उनका भी हम बयान भी लेंगे. But just एक कॉल जो अभी पहले आई थी, the gentleman जिन्होंने visitor visa के बारे में बात करी थी. So the rules are very clear on there's not the requirement of financial जो the requirement is more about the person. The 18,600 does not apply. Yes. If you want to call somebody to visit you, members of the family, friends, anybody, you only have to do a statutory declaration which you can download from the internet, and then you have to Raj caller, I'll come back to you. Welcome to Legal Matters. Hello. हेलो जी कौन साहब, वेलकम टू द लीगल मैटर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना है एक. जी पूछे. ये हमारी एक लड़की आई थी पाकिस्तान से, शादीशुदा जी, तो उसे 2.5 साल का वीजा था. उसके बाद वो 2.5 साल होने को थे, तो हमने एप्लीकेशन दी एक्सटेंशन के लिए. तो वो चूंकि उसका हस्बैंड काम नहीं करता था, लेकिन हमारे पास सेविंग इतनी थी, कोई 60-70 हज़ार पाउंड, कि हमने उस बुनियाद पर अप्लाई किया. तो होम ऑफिस वालों ने कहा कि आपके 6 माह ये सेविंग के पूरे नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम कम रह गया है. तो हमसे वो मिस्टेक हो गई. तो अब किसी से पूछा है हमने, तो हमारे पास अपील का हक था, अपील आपने कर दी. तो अपील में चूंकि वो 6 महीने पूरे ही नहीं है, तो वो तो उसके चांसेस बहुत कम है. तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, आप
एक न्यू एप्लीकेशन तैयार करें जी और वो जो आपने डाली हुई है अपील वो एक दिन विड्रॉ करें ठीक है वापस लें और दूसरे दिन वो जो एप्लीकेशन नई वो डाल दें। तो पूछने वाली बात ये है कि अगर हम वो नई अपील विड्रॉ करके नया केस डालते हैं तो ये भी हमें 2.5 ईयर का मिलेगा या हमें दोबारा से 5 साल के रूट पर जाना होगा? ये स्पाउस वीजा था ना शादी का? यस जी शादी का। ठीक है ओके ठीक है शुक्रिया we'll come to that thank you just very quickly जो spouse visa let's just finish that one Yeah. जो So the person who is inviting somebody Yes. to come to this country for a visit, he has to only show that he could maintain that person, the sufficient accommodation, and all medical treatment will be taken care of it. And should he not leave, that person who is sponsoring the person is responsible to send that person back. So as long as a requirement that he meets, that he can maintain that person to come here, that's just all he needs to sponsor know. Yeah, bas. so basically thank you Raj और एक और चीज़ उसमें ये थी जो sponsor के अलावा जो family आ रही है UK में as a visitor they need to have ties back in the country. Yeah, that's right. Yeah. That's very important. तो उनको ये genuineness देखना होता है. They're looking for genuineness. that आप आ रहे हैं genuine visitor के. That's the criteria. So you go back. Raj जिस तरह बताया, that's why tickets are booked for return at the same time and all the requirements. I'm just with a short time. Raj साहब से भी मुझे एक दो बात करना थी time की वजह से running short of time. Just coming very quickly जो spouse visa का था 2.5 years पहला visa था. They then put the income down as the savings for the next part of it. वो कह रहे हैं इसे withdraw करके नई fresh application डाले. Are they going to get it 2.5 years? Yeah, उनको No, they will get another 2.5 years. Then 2.5 she's already got, done. And then she will get another 2.5 after 5 years indefinite leave. After that she can apply for British passport. Yeah, but before that उनको 5 साल complete करना पड़ेगा. अभी आपने जो question जो हमें दिया है ना, तो आप हमें हमारे साथ contact कर सकते हैं. हमारी जो details होंगी आप control room से ले सकते हैं. We will be more than happy. We can also help you from our sales as well from Liberty Law UK. आप उसके details ले सकते हैं. We will be more than happy to provide further information. अच्छा राज साहब के पास मैं आता हूँ इस बार. राज साहब आपसे मुझे थोड़ा सा discussion change कर रहा था around from now legal matters to Pakistan के जो issue था because we are British Pakistani living here. तो इस वजह जो government जो बदली पाकिस्तान में and one of the again it's a legal issue जो corruption के जो charges इमरान खान गवर्नमेंट ने लगाए और यहाँ पे जो वो गवर्नमेंट को उन्होंने किया है जो इनके एसेट्स हैं उनको फ्रीज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अच्छा वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम शुरू किया है. ये अभी 100 दिन का इन्होंने जो टारगेट दिया था ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं. कल मैं देख रहा था फवाद चौधरी का, हालांकि मैं उसकी 2-3 बार उसकी क्लास लिए कुछ नोट्स पे, लेकिन कल जो कुछ उसने कहा बिल्कुल सही कहा. फवाद चौधरी ने उसने अपना जेलम के लोगों को एक बार जगा दिया कि जेलम में भी कोई बंदा का पुत्र है. उसने बोला कि चोरों को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ, डाकू को डाकू ना कहूँ क्या कहूँ. ये मुल्क के गद्दार थी पहले दोनों पार्टियाँ. इन गद्दारों ने डैम के लिए क्या किया. और अभी सिंध पर अपने सूबाई गवर्नमेंट के कुछ वज़ीर और कुछ MPA वो बोल रहे हैं कि डैम नहीं बनने देंगे. ये पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी, ये गद्दार पाकिस्तानी हैं. ये वो काम कर रहे हैं जो हम गद्दार करते हैं, जो दुश्मन पाकिस्तान का करता है, जो पाकिस्तान के दुश्मन के झंडे पे काम कर रहे हैं. जो भी पाकिस्तान डैम के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार पाकिस्तान होगा, गद्दार इस्लाम होगा. और वो दुश्मन के झंडे पे काम कर रहा होगा, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं. और उसको बिल्कुल दहशतगर्दी उस पर FIR करनी चाहिए. जो भी पाकिस्तान डैम के खिलाफ बोलेगा कोई उसमें रो रात नहीं होनी चाहिए. और इनको उल्टा लटकाना चाहिए. जैसे इस्लामाबाद में इन्होंने कई अपने चोरों के जो प्लाजे थे और वेडिंग हॉल बने हुए थे, नॉमिनेशन करें. मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ उनकी ये नॉमिनेशन करें कि ये इस चोर का वेडिंग हॉल था, ये इसको प्लाजा था. सबका पर्दा स्कीम पे आना चाहिए. और ये फवाद ने जो कहा था कि दूध की राखी बिल्ला नहीं बिठाना चाहिए, और यही होना चाहिए. कोई इसमें आइन नहीं कहता कि अपोजिशन लीडर ही जो अपना एहतसाब कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए. इनका एहतसाब और सिर्फ अवाम एहतसाब चाहती है. और दूसरे पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो असाक ने एक गरीब अवाम के साथ, और मोस्टली उसका नुकसान ओवरसीज पाकिस्तानी को हुआ था कि उसने ऐसा उसके अंदर एक बगैरती की इंतहा को पहुंचा हुआ था. वो ऐसा गलीज इंसान था. अभी वो बिल्ली चूहा बन के फिर रहा है कि जिसने एक
بینک اکاؤنٹس بند جو 6 مہینے پاکستانی اوورسیز اور کوئی بھی موسٹلی اوورسیز وہ کہاں یوز کر سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے اگر تو ہم پاکستان اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ یوز نہیں کریں گے وہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. وہ سارا بینیفٹ بینکروں کو گیا, کوئی پبلک کو نہیں اس کا بینیفٹ ہوا. اور وہ 6 مہینے کے بعد میں خود اس میں انوالو ہوں کہ 2-3 بار جا کیا, وہ کہتے ہیں ہم نے اپلیکیشن ڈال دیا, پھر وہی اکاؤنٹ بند پڑا ہوا ہے. ہمارے پیسے وہ بینک والے نہیں دے رہے, اور اس شیطان کی وجہ سے نہیں دے رہے, یہ ساگ ڈار کی وجہ سے. اور میں یہ اپنا اسد عمر سے کہتا ہوں کہ وہ بینک کو اپنا جو انہوں نے لا بنایا ہوا تھا کہ 6 مہینے اگر کوئی اکاؤنٹ نہ چلے اور اس کو بند کر دیا جائے, وہ دوبارہ ری اوپن ہونا چاہیے, اور اس کا بالکل آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنے لوگوں کو نقصان ہوا اور اس کے کتنے پیسے ان بینکروں نے لیا, اور اس کو اس سے کمیشن ملا ہوگا. میں مست جانتا ہوں کہ اس سے کمیشن ملا ہوگا. اور یہ کچھ لوگ فرض کیا ادھر سے جاتے ہیں, وہ اس کا ٹیسٹ کا لینا تھا نہیں, اور وہ 0.6 جو ہے وہ ان سے ویسے کاٹ لیتے ہیں. اور یہ جو اس نے اپنا ساگ نے جو ایک اپنا ذاتی شیطانیت ذہن کا مالک تھا, اس نے ذاتی جو کام شروع کی تھے اس کو ختم ہونا چاہیے. سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ وہ ری اوپن ہونے چاہیے, جن لوگوں کے بھی بینک اکاؤنٹ انہوں نے بند کیے ہیں, اور جتنے ڈپازٹ اس میں ہیں وہ نامینیشن ہونا چاہیے. اتنے ارب روپیہ ہوگا جو بند پڑے اکاؤنٹ ہیں, اور سارا ان چوروں کو اس کا فائدہ ہوا اور پاکستانی پبلک کو اس کا نقصان ہوا. اور اس کا احتساب کے علاوہ میں اسے گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, احتساب کے علاوہ ہمیں کوئی آپشن قبول نہیں ہے, کوئی جو اپنے وہ پہلے چوہے بلی والا کھیل نہیں چلے گا. اگر احتساب کریں گے تو ان کو پبلک یاد کرے اور اوورسی بھی یاد کریں گے. اور دوسرا میں اس گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو پی آئی والوں نے انہوں نے بھرتیاں کی ہوئی تھی, اپنے چاچے مامے کا راج بنایا ہوا تھا, ایک جہاز پہ اگر 30 بندے چاہیے اور انہوں نے 150 بندہ بھرتی کیا ہوا تھا. اور ٹکٹ جب ہالیڈے آتی ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی, یا جو یہ ہمارے پاکستانی پی آئی والے اور یہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ کی فیلئر ہے, اور سب کی ان کی ایک اپنا پاکستان دشمنی ہے. پاکستان دشمنی تھی کہ وہ ہالیڈے میں ٹکٹ اتنا ہائی کرتے تھے, اگر کسی نے فل فیملی نے پاکستان جانا ہوتا تھا تو وہ بالکل یا تو جاتے نہیں یا ایک بندہ جاتا. اور یہ پاکستان سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں عوام کو, یہ خود غدار ہیں, اور غداری کی وجہ سے پاکستان سے اگر یہ اوپن ہو. جی بہت اچھا اپنا پوائنٹ گیا. ول کم بیک ٹو دیٹ. ٹائم کی وجہ سے سوری میں آپ کے جذبات کو really just very quickly would like to say I just something. wanted to congratulate Imran Khan on the election, and hopefully inshallah we're going to have a new and great Pakistan. Corruption will finish, and the country will progress. And the point that you mentioned about the PIA, absolutely disgusting. I mean, I usually go on Emirates to go to. I'd rather stay in Dubai a couple of days and then go to Pakistan. The flight is horrendous, and the payments that we pay is just disgusting. I just hope they can do something about this. Okay, we're talking about Pakistan government nationalize جو ان کی ہالیڈے میں nationalize ہالیڈے میں the ٹکٹ چیپ ہونا چاہیے, کیونکہ فل فیملی پاکستان جا سکے, اور فیملی ادھر کو دلچسپی ہو پاکستان میں رہنے میں, دلچسپی ہو پاکستان. یہ ہمارے ڈسکشن پیسے لینے کے لیے تم ٹھیک ہو, اور پاکستانی عوام کے اوورسیئروں کا خیال نہ کرو. سب سے پہلے یہ ٹکٹ چیپ ہونا چاہیے. بھائی صاحب یہ بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. we're going to come back. Raj would like to finish on sure. one or two issues. Yeah, as we discussed that matter. If anybody is listening and they know those victims, please get in touch with us. We will be willing to help and assist them to lodge a complaint against those officers, and we will assist as much as we can. I'd like to operate your panel. I want to thank all the panel members, Ali Reza, Raj Chopra, and Apne Bashir Saab, Raj Saab, who came onto the program. This is mostly been very interactive, and काफ़ी fast हुआ इसमें discussion. बहुत सारे topics हैं which we need another program to discuss them. But आज का program में यही था, we discussed some of the legal issues, some of the current issues जो communities को face हो रहे हैं. But inshallah हमारे जो next program है, we are going to talk about some issues about landlords and tenants issues, क्या rights होती हैं, how does it affect you, Section 8 कब use होता है, Section 21, what is the policy of deposit scheme के बारे में. We're going to talk something on those lines as well. Next week we are going to talk about police के बारे में, where you get stopped, and जो speeding fines or any other issues relating to that. We'll have the special discussion on that. तो अगर आपके कोई इस तरह के कोई cases हो or anything to do with immigration, civil or legal, then आप please हमारे details ले सकते हैं from control room से. We'll be more than happy to assist you. Amara, again, ये program will be interactive. We're trying to do both things at the same time, legal
information and also some of the community issues. We're going to be back next week, same time we're going to be back. और आपसे ये होगा, thank you for watching our Legal Matters program. और जो आज जो भी program था, it was pretty interesting because इस वक्त हमारे पास जो वीडियो दिखाई थी was mainly because some of the issues with the police, excessive force you use करें, and the government के जो statistics हैं वो खुद दिखा रहे हैं the police force is being used excessive against the black people. And हमारे जो panel ने discussion में लेके आए थे Raj साहब, Raja, Raj as well and Ali Raza, that some of the issues related to Islamophobia इस पे भी हम discussion आगे चलाएंगे so that we have a balanced discussion and we're going to maintain that. So thank you for watching. We'll be back next week, same time, so keep watching Legal Matters. Thank you.